हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू एयू कॉमर्स कॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 2, जिसमें हम अगले 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 2। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन है हमारा द वैल्यूएशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट इज बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग। पहला ऑप्शन the present value of future cash flows. दूसरा ऑप्शन the current yield to maturity on long-term corporate bonds. तीसरा ऑप्शन the capital budgeting process. चौथा ऑप्शन what the corporation is paying to attract preferred shareholders. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है the valuation of a financial asset is based on determining the present value of future cash flows. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है हमारा when the coupon rate on a bond is equal to the yield to maturity, the price of the bond will be option A par, option B above par, option C below par, option D more information is required. पार का मतलब आप समझते हैं ना, फेस वैल्यू के बराबर इस पार। तो इनका जो सवाल है कि व्हेन द कूपन रेट ऑन अ बॉन्ड इज इक्वल टू द यील्ड टू मैच्योरिटी, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी ऑप्शन ए पार। जो प्राइस होगा बॉन्ड का वो उसके फेस वैल्यू के बराबर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। पहला ऑप्शन डिवाइड द रेट ऑफ मैच्योरिटी बाय द डिविडेंड अमाउंट। दूसरा ऑप्शन डिवाइड द डिविडेंड अमाउंट बाय द रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा ऑप्शन डिवाइड द डिविडेंड अमाउंट बाय द रेट ऑफ रिटर्न माइनस द ग्रोथ रेट। और चौथा ऑप्शन डिवाइड द डिविडेंड अमाउंट बाय द ग्रोथ रेट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। किसी भी प्रेफर्ड स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डिवाइड द डिविडेंड अमाउंट बाय द रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, one assumption underlying the use of the cost of capital to analyze capital projects is that current cost will remain the same. Option B, capital structure will vary with the type of financing. Option C, different risk projects are required to diversify the firm. Option D, the analyzed projects are of comparable risk to existing projects. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। One assumption underlying the use of the cost of capital to analyze capital projects is that the analyzed projects are of comparable risk to existing projects. तो जिनको एनालाइज कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, उस उनका जो कंपेरेबल रिस्क है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बेसिस के ऊपर है। हमारा अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू ऑप्शन ए the return on new common stock, option B the return on preferred stock, option C the return on existing common stock, option D it does not have a cost. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। The cost of retained earning is equal to the return on existing common stock. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर प्रोजेक्ट्स with a life of at least 1 year. Option B 5 years, option C 10 years, option D 15 years. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट्स with a life of at least option A 1 year. Option A 1 year is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, under the payback period we compute the time required to recoup the original investment. Option B, there is no consideration of inflows after the cutoff period. Option C, the time value of money is ignored. Option D, all of the above are correct.
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अंडर द पे बैक पीरियड वी कंप्यूट द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकूप द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय में वो पूरा पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट का वापस आ जाएगा। देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ इनफ्लोज आफ्टर द कट ऑफ पीरियड एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। ये सारी चीजें की जाती हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब समय के हिसाब से पैसे की वैल्यू फॉल कर जाती है, तो ये सारी चीजें इग्नोर की जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, all of the following are true of capital cost allowance except it is a non-cash expense, it is non-tax deductible, it provides tax shield benefits, it should not be disregarded in capital budgeting decisions। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अगला, measures dispersion or variability around the expected value। Option C, may be used to compare investment with the same expected return। and option D, all of the above are correct। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो है स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के आसपास होती है, और उसे इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए विद सम एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, द एफिशिएंट फ्रंटियर रिप्रेजेंट। जो एफिशिएंट फ्रंटियर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन, द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ऑप्शन बी, ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ्स। ऑप्शन सी, द करेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल फर्म्स टू मेक। ऑप्शन डी, द कोरिलेशन बिटवीन प्रॉफिट्स एंड द पोर्टफोलियो इफेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एफिशिएंट फ्रंटियर रिप्रेजेंट्स optimal risk return trade-off। Option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following constitutes an internal source of funds। इनमें से कौन सी चीज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड के कैटेगरी में आती है? पहला ऑप्शन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दूसरा ऑप्शन कॉमन स्टॉक, तीसरा ऑप्शन कमर्शियल पेपर, चौथा ऑप्शन रिटेन्ड अर्निंग एंड एमोर्टाइजेशन कैश फ्लो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिटेन्ड अर्निंग एंड एमोर्टाइजेशन कैश फ्लो। हमारा अगला क्वेश्चन, it would be fairly to say that securities market in future will become more competitive as an international market system develops। Option B, will be less efficient। Option C, will be more highly segregated than they are today। Option D, will be less automated than today's market। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है it would be fair to say that securities market in the future will become more competitive as an international market system develops। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, द स्प्रेड में बी बेस्ट बी डिफाइंड एज द compensation due the lead underwriter। Option B, the total compensation for those participating in the distribution process। Option C, the price finally paid by the public for the shares। Option D, the proceeds from the distribution received by the firm। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द स्प्रेड में बी डिफाइंड एज द टोटल कॉम्पनसेशन फॉर दोज पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जितने लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका टोटल कॉम्पनसेशन जो होता है वो स्प्रेड कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स सेलिंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, wealthy individuals, all of the above are correct। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above are correct। हमारा अगला क्वेश्चन, debt that is not secured by specific assets is called an indenture, B, a debenture, C, a mortgage agreement and D, common stock। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अ डिबेंचर।
Debt that is not secured by a specific asset is called a debenture. Debentures जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक असेट द्वारा सिक्योर किए गए हों, बॉन्ड्स जबकि किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इन अ लीज वर्सेस बोरो, to purchase a decision the appropriate discount rate except for the salvage value is the cost of capital, the after tax cost of debt, the cost of equity capital, the cost of the debt। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब अगर हम इसे पूरा रीड करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन अ लीज वर्सेस बोरो, लीज पे कोई चीज लें या बोरो करें, टू परचेज डिसीजन द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट एक्सेप्ट फॉर द सैल्वेज वैल्यू इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रेफर्ड इक्विटी हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन फिक्स डिविडेंड्स, दूसरा ऑप्शन द क्यूमुलेटिव राइट टू एनुअल डिविडेंड्स, ऑप्शन सी precedence over common stock dividends, and option D residual claim to income। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है preferred equity has all of the following characteristics except residual claim to income। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, अंडर द मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, the firm must compare what it can earn with what shareholders could earn on the funds if they were distributed। Option B, all funds above and beyond retained earnings are paid to shareholders। Option C, funds not paid to creditors and preferred shareholders belong to common shareholders। And option D, all projects are financed internally। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर द मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, the firm must compare what it can earn with what shareholders could earn on the funds if they were distributed। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, a stock dividend represents a distribution of additional shares to common shareholders। दूसरा ऑप्शन, differs from a stock split largely in size। Option C, normally has no real value to the investors। Option D, all of the above are correct। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above are correct। Stock dividend represents a distribution of additional shares to common shareholders। A stock dividends differ from a stock split largely in size। A stock dividend normally has no real value to the investors। So option D, all of the above are the correct answer for the given question। And the last question is, a convertible security is, जो convertible security है वो क्या है? A convertible into cash at the option of the holder। Option B, a bond or share of preferred convertible into common at the firm's option। Option C, a bond or share of preferred convertible into common at the holder's option। And option D, a security convertible into a debenture at the holder's option। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है a convertible security is a bond or share of preferred convertible into common at the holder's option। Option C is the correct answer for the given question। I hope and believe कि आपको ये 20 questions भी बहुत पसंद आए होंगे। On this note, thank you so much for watching this video and all the best for your examinations।